I'll start from where we left last time, and we'll talk about this pointer. We'll talk about the operator overloading, and then we'll talk about dynamic memory allocation towards the end. Last time I discussed operator overloading, and I'll just go over that again. I've also uploaded the coding videos as well, so I hope you have gone through those coding videos. So let's just start by the concept of this pointer, and then we'll come to the operator overloading part. Okay, so this example on operator overloading was discussed last time. So let me just start by the concept of this pointer. Those of you who have gone through the coding videos and who have gone through the slides may know that what this pointer actually means. Okay, so primarily this is a keyword that is used in C++, and this keyword here refers to a pointer, and this pointer points to the contents of, or the object, which is the invoking object of any function or of any operator. Okay, so invoking object kya hota hai? So let's just discuss that what this invoking object is. For that, here is an example. If you look at the left side of your top corner of your of the slide, you will find that here you have a function call, and this function call, the function name is setX. Okay, and this is a setter function, sets a value 10 to a variable, and OB1 is the object that is calling this function. So the function that is, the object that is calling this function is OB1. Therefore, OB1 is the invoking function object in this case. So OB1 is the invoking object, and it's invoking this function, which we have got here, which is setX. So what would happen is कि setX जिस variable को भी set करना है उसने value 10 है उसको set कर देनी है, but that value or that parameter would belong to OB1, so object 1. So this will be considered as the invoking object. ठीक है जी. Here is another example. यहाँ पे invoking object जो है that is OB2. So OB2 is the invoking object. So it's invoking this function, and it's setting the value 10 to some variable. Acha. So this pointer would always refer to the parameters associated with the invoking object. Okay. So let's say कि यहाँ पे if you look at this part of the slide, यहाँ पे there is a class point. X and Y are two parameters which are here. Okay. And the function here is the setX function, and this is the body of this function. What it's doing is that it's using this pointer, and this pointer points to X and sets a value of A to this. Okay, so this points to X. So what would be this X? This X here, the value, the parameter X here would refer always to the invoking
object in this case. So if you look into your main program, if I'm saying ob1.setX, this would refer to x of ob1. Okay, and if the invoking object is ob2, then this would point to x of ob2, right? So this is what this function is doing. Okay. This is also available in structs. Because it's a type of a pointer, it would always refer to the invoking object, whether it's in the form of a struct or in other form. Yeah. Okay. So it's basically a generic representation. Qaim, it's a generic representation that would always refer to the invoking object. So you don't really have to keep or write down the invoking object every time. So let's say कि मैं ob1 के लिए invoke करना चाहता हूँ, तो in the main program I'll simply use the pointer. So that's actually how the pointers are used. This is an alternate way of assigning values to certain parameters. You may use it, or you may use the other ways of actually doing it. Okay, so in a standard form, what you can do is that you can use this operator here, or this pointer here, and then use it. So ज़्यादा यूज़ हुज़ैमा ने ठीक बात की है. ज़्यादा यूज़ इसकी जो है वो उस वक्त आती है जब आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, तो उसके अंदर अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है. द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट माइट चेंज, so therefore you can actually use this pointer. If you are not using a pointer, then there is an easier way of doing that also, which is for example, I'll just show that when I'll be showing the code here. There are an alternate way of doing it. Okay. Acha. So I'll just repeat for those जिनका connection जो है वो might have lost the connection during the discussion. Okay, so let me just repeat this part. So this pointer always always points to the parameters of the invoking object here. So in this case, if I'm saying ob1.set, so the invoking object is ob1, or ये जो this pointer है, that would point to ob1, and it's saying that this to x. So that means कि ये जो x जिसको आप refer कर रहे हैं, this x would belong to ob1, क्योंकि ob1 is the invoking object in this case. Similarly, अगर invoking object ob2 है, तो this pointer would now point to the x of ob2. अच्छा, इसका ये फ़ायदा ये है कि एक और फ़ायदा ये है कि this you can point it to any data member or any member of that particular object, whether it's a data member or it's a function. ठीक है जी. Okay. So here is a
here is a slide that actually shows that how this pointer actually points to various objects. Um, so OB1 के केस में OB1 dot set x के केस में this would point to x of OB1, or OB2 set x के केस में it would point to x of OB2 and would set the values here. Okay, so just go through this particular bit and try to resolve if there is any mistake in this. Try to find out that mistake and try to resolve this. I'll just show you the coding bit of this before I move on. Okay, so here is part of a code that actually uses, I hope you can see this, that actually uses this pointer, right? So यहाँ पे we have defined a class test. इसका private member x है, public member के अंदर एक function है set x, and set x is primarily setting the value x to the x of the invoking object. जो भी आपने value set उसकी करनी है, and then you are printing the value of x. ठीक है जी. Just forget about this part for a while. I'll just comment this out for a while. Okay, and then we'll come to this later on. By the way, जो coding video मैंने upload किया उसमें इसकी complete details available. You can also go through that also. So in the main program, we have defined an object obj, और x की value को मेन प्रोग्राम में हमने उनको वैल्यू सेट की है, एंड देन obj is invoking this function set x, this set x function. ठीक है, और then we are printing this value. So if you run this code, you will see कि इसका रिजल्ट क्या आता है. So you can try to run this code and find out कि इसका रिजल्ट क्या आता है. अच्छा, now the second function here is square it function. So what is this square it function doing? This square it function is taking the value of x and it's actually squaring that value, and then it's storing that squared value in to the x of the invoking function. Okay, so square it function takes an argument, and that is also an object of type test, right? This is also an object of type test. You can see that this is test and this is passing by reference. So R is a generic sort of an argument that we are passing here. So in order to so what is this line doing? So these three lines here, these two lines here primarily, these two lines here, they are primarily doing two separate things. Okay, they are not exactly the same. So I'll just block the second line here, statement here, and I'll just use the first statement. So what is the first statement showing? First statement is taking the x value of the argument. So we are saying that r dot x, the x value of the argument is taken, and then it's actually the square of that is taken, which means that you are actually multiplying it with itself, and you are storing it in the x value of the invoking object here. So the invoking object will be as defined in the main program. So what I'll do here is that I'll just run this this part here. So what I'm doing here is that I'm generating two objects here, t1 and t2, and t1 की value मैंने set कर दी 30 पे, and t2 की value set कर दिया 10, and now I'm invoking a square it function, and the invoking function in this case is t1, right? The invoking function is t1 and t2 is the argument, right? So what should this function do? Test a square it function. This should take the value of x of t2
multiply it with itself and store it in T1. Assign it to T1. ठीक है, T1 में क्यों assign करेगा? क्योंकि T1 is the invoking object और यहाँ पे हमने ये कहा है कि this points to X, this part here, this points to X. That means कि ये calculate करो और assign कर दो X of the invoking object. So invoking object in this particular case is T1. Okay, so if you run this program, let's see that what happens. So let's see कि expected output क्या आनी चाहिए. X की वैल्यू जो आपने सेट की है T2 के लिए वो 10 है, तो उसका स्क्वायर जो है 10 into 10 जब आप करते हैं multiply it with itself, it gives you a value of 100. So T1 की जो X है, that should get a value of 100 here. ठीक है, so let's see if we run this program, let's see whether the same output is. So there is some error here, I guess कि कहीं पे मैंने कोई mistake कर दी. Okay, some sort of an error here. ठीक है. So if you can find out line that number 26, so line number 26 में वो आपने comment out नहीं वो किया. comment out नहीं. Okay, yes, thank you. Okay, so let me just run this. Yeah, so this is what you get. तो आपके जो T1 का जो X है वो मैंने जब print किया तो I've got a value of 100, which is perfectly fine, which I want to do. अच्छा, let me comment out this line. So I'm commenting out this line जिसमें r.x मैंने use किया है, and I'll uncomment the second line here. So what do you expect here to happen? क्या होना चाहिए यहाँ? जी, you can unmute and answer as well. जी, the value, you are right, Ahsan, Abdullah, you are absolutely right. तो अब मैंने किया है x steric x, ठीक है. तो x steric x में I did not qualify कि ये x कौन सा है, ये r का है या किसी और ऑब्जेक्ट. तो when I am not qualifying it, जैसे इस लाइन के अंदर I said कि r.x आपने उठाना है और उसको आपने अपने आप से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे I didn't say anything. ठीक है, what I am saying here is कि आपने x को उठाना है और x से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन which x? ठीक है. So remember this, by default when I'm saying this points to x, or if I'm only saying x, दोनों में से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. x भी simple लिखूं without writing any object with it, this x here would automatically bind itself to the invoking object. ठीक है, तो अब by default x जो है ना, I'm not saying कि r.x आप लें, but I'm saying कि x उठा लो. तो ये x कौन सा उठाएगा? ये x हमेशा invoking object का x उठाएगा और उसको multiply करेगा. So the expectation of this particular execution would be that it would take the x value of the invoking object, right? And that x value is 30. It will multiply it with 30 and update the value of x. ठीक है जी. So update the value of x. So let me just run this. Acha, run नहीं हुआ. I'll just run it. Okay, so now you got 900. ठीक है. So if you write x or if you write this points to x, in both cases this would always be the x of the invoking object, unless I write it the other way. So जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा था, इस लाइन के ऊपर I said that it would be r.x. So it's very clear कि ये किस x की हम बात कर रहे हैं. We are talking about the argument here. तो जो भी आपने argument के तौर पे पास करना है. If you look at this function here, square it.
इसका आर्गुमेंट t2 है, तो इफ आई एम सेइंग r डॉट x तो वो t2 का x उठाएगा, राइट? वो t2 का x जो है ना वो उसको उठाएगा। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइन नंबर 24? ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन नंबर 24 जो है ना, इट्स बेसिकली इन्वोकिंग द फंक्शन सेट x, तो वो x की वैल्यू को सेट कर, ठीक है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि x की वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली x इज अ प्राइवेट मेंबर, तो यू कैन ओनली सेट इट थ्रू कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सेट एक्स के थ्रू वैल्यू ऑफ एक्स को सेट करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन बी रिटेन्ड इन दिस सिस्टम, अदरवाइज इट मे नॉट बी रिटेन्ड, ठीक है। सो यू कैन वर्क आउट विद दिस पीस ऑफ कोड, और ये कोडिंग वीडियो में आपको मिल भी जाएगा। तो इस केस के अंदर जो है वो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस पर्टिकुलर कोड। अच्छा, शर्जील का क्या मुस्तफ़ा ने कहा है जी, शुड लाइन 22 भी इनवैलिड? नहीं, लाइन क्योंकि दिस इज पार्ट, देखें टेस्ट स्क्वायर इट जो है ना, दैट इज मेंबर ऑफ दिस क्लास टेस्ट। तो आप मेंबर फंक्शन के अंदर तो आप प्राइवेट मेंबर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन है स्क्वायर इट विच इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट क्लास, तो उसके अंदर आप प्राइवेट मेंबर को कॉल कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। द ओनली इशू इज कि आप मेन कोड से जो है वो प्राइवेट मेंबर को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है जी। जी, तो अच्छा, हाउ इज इट बी कंसाइंड? देखो बात ये है शयान, ये जो दोनों लाइंस हैं, अगेन बोथ ऑफ दीज लाइंस आर पार्ट ऑफ अ फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर प्राइवेट मेंबर को आप कॉल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट फंक्शन बिलोंग्स टू द सेम क्लास। तो स्क्वायर इट बिलोंग्स टू द सेम क्लास विच इज टेस्ट, इसलिए इसके अंदर आप एक्स को कॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है जी। Okay, so I hope this would be clear. This would require some practice on your end. So line 24 की फिर क्या जरूरत है? That's what you are saying कि line 24 this is something you can try it out. Try to comment this and run it. I'll not do it because otherwise you will not do it. ठीक है, तो आप इसको कोड को लें और ये कोडिंग वीडियो में पढ़ा हुआ है. I'll also share the CPP file. Try out various things and find out कि कौन सी lines redundant है और कौन सी lines redundant नहीं है, किन lines के बगैर गुजारा हो सकता है और किन lines के बगैर गुजारा नहीं हो सकता. I'll leave it as an exercise for you. ठीक है जी. तो अच्छा, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, अगर मैं अब इफ आई डू दिस t2 डॉट स्क्वायर इट t1, तो इस केस में इन्वोकिंग फंक्शन जो है वो t2 हो जाएगा, ठीक है. तो नाउ दिस वुड रिफर टू द x ऑफ t2, नॉट टू x ऑफ t1. सो एंड r वुड रिफर टू t1, ठीक है, जो कि मैंने फंक्शन के अंदर इसको लिखा, ठीक है जी. So I hope this clarifies. और अब अगर if you look at this overloading example, overloading function example, जो कि box वाली examples हमने last time की थी, so just look at this definition of the operator overloading function. Here there is one, so this is the same example that we discussed last time, that there are two boxes and you want to add their respective dimensions together to generate a third box. So यहाँ पे there is one argument object, and the definition tells you that the argument object is the one that comes after the operator, ठीक है. और आर्ग्यूमेंट ऑपरेटर जो है ना, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, वी आर रिफरिंग टू दैट एज बी. सो यहाँ पे बी डॉट लेंथ, बी डॉट ब्रेथ, बी डॉट हाइट जो है ना, दैट वुड रिफर टू द आर्ग्यूमेंट object. The argument object, as I told you, is something that would fall after the operator that you are trying to overload. Or this would refer to the invoking object. The invoking object is the object that comes before the operator, and this is as per the definition that we have defined. So this length plus b dot length would mean
कि आप इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट की लेंथ उठाएं और बी की लेंथ के अंदर जो है इसको आप ऐड ऑन कर दें. अच्छा, there is one thing which I'll like to point out here, and I'll again leave it as an exercise for you. Try to figure out कि ये क्यों है. The question is that why is there this constant? ठीक है, तो C1ST जो है यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? So that's my question to you. Try to figure out that and come up with an answer to this. And the return type of this is again a box. Okay, so this is how this function would look like. So here we have box 1. In the main program we have declared box 1, box 2, box 3. उनकी values को और उनकी lengths को breadths को आपने set किया. और यहाँ पे on line 56, if you look at line 56, we are invoking this operator, plus operator here. अच्छा, plus operator को invoke कर रहे हैं आप. और now the invoking function will be object 1. ठीक है, and the argument, so-called argument for this operator will be the one that comes after that, which is box 2. ठीक है, and if you do box 1 plus box 2, the respective lengths and the respective heights and widths will be added as per the definition of this overloaded operator overloading function, right? Okay, so the answer should be that lengths of the two should be added, breadths of the two should be added, and the heights of the two should be added, और वो box 3 के अंदर store हो जाना चाहिए. ठीक है. Okay, so let's just run this code, unless there is some error that might get generated. No, so it works perfectly. So box 1 की dimensions जो हमने set की थी वो 210 थी. box 2 की dimensions volume जो dimensions की base पे निकला है वो 1560 है, और box 3 का जो volume निकला है वो 5400 है. Okay, so last time there was a question कि जी अच्छा अगर हम plus operator को किसी और तरह से use करते हैं तो फिर क्या होगा. तो let's say कि अगर मैं यहाँ पे 3 integers define कर देता हूँ और फिर मैं ये कहता हूँ कि a is equal to b plus c, तो इस सूरत के अंदर c out a अगर मैं करता हूँ, so let's see कि what happens in this particular case. ठीक है, because these are ये operator overloading के में नहीं आएगा. यहाँ पे ये जो plus operation है, this will not be an operator overloading execution यहाँ पे नहीं होगी. The reason for that is कि we have defined in our function कि this operator overloading is only applied on objects of type box, right? Otherwise this overloading operation or this overloading function will not be applied. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट बॉक्स के अलावा किसी और के ऊपर आप प्लस साइन यूज करते हैं, जैसे इस केस के अंदर हमने किया, यहाँ पे मैं b की वैल्यू को भी सेट कर दूँ. लेट्स से कि b की वैल्यू मैं 1 सेट कर देता हूँ, c की वैल्यू को 1 सेट कर देता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यूज b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 सेट करता हूँ एंड देन आई से b plus c, तो बिकॉज b and c and a are not the objects of box class, therefore यहाँ पे normal addition operation होगी. ठीक है, the normal addition operation will be done. I hope this is clear. Again, I mean you can run this and see कि ये क्या आएगा. ठीक है, so a की वैल्यू क्या आनी चाहिए इस केस के अंदर? a की वैल्यू obviously 2 आनी चाहिए, क्योंकि दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो you will get a value of 2 in this case. ठीक है, right. अच्छा जी, coming back to कुछ कमेंट्स हैं. लेट मी जस्ट ट्राई टू एड्रेस दैट. फाइक ने पूछा है कि आप ये क्यों नहीं कर लेते कि दिस पॉइंट्स टू लेंथ और उसको आप इक्वेट कर दें दिस टू लेंथ प्लस बी डॉट लेंथ. अच्छा, उसको उस सूरत में क्या होगा? आई मीन
फाई की उस सूरत में क्या होगा कि बॉक्स 1 की जो लेंथ है ना दैट विल बी ओवर इट, ठीक है। बॉक्स 1 की लेंथ आप बॉक्स 2 की लेंथ में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर बॉक्स 1 की लेंथ को आप असाइन कर रहे हैं वो एडेड वैल्यू, ठीक है। तो इस सूरत में आप इसको नहीं ये यूज नहीं हो सकता। अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल एडिशन ऑपरेशन फॉर बॉक्स वेरिएबल्स आप कैसे यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं जैसे ये मैंने अभी एग्जांपल आपको दी है। लेट्स से कि मैंने लेंथ और हाइट और दो लेंथ्स को सिर्फ ऐड करना है, राइट? तो उनका जो वेरिएबल्स हैं I'll actually write down, I can, because they are private members here, so I can't directly do it from the main program। मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसके अंदर मैं दोनों की लेंथ्स को सिंपली ऐड कर दूंगा, सिंपल एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। वो सिर्फ क्योंकि लेंथ्स आर नॉट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द टाइप ऑफ द क्लास टाइप बॉक्स, ठीक है। लेंथ यहाँ पे आपने डिफाइन की हुई है विच इज डबल, तो दो डबल्स को आप सिंपल ऐड करेंगे और उसमें नॉर्मल एडिशन हो गई, ठीक है, राइट। सो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम हियर। सर जी जी सर, कुड यू एक्सप्लेन दैट हम वो कांस्टेंट क्यों लिखते हैं? हाँ, ये मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है। ट्राई टू फाइंड आउट, फिगर इट आउट योरसेल्फ फर्स्ट, एंड इफ यू आर अनेबल टू गेट एन आंसर देन वी कैन डिस्कस दिस, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस टू फाइंड आउट कि आपने वहाँ पे कांस्टेंट लिखा, ठीक है, और सो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट दैट। जहाँ पे कांस्टेंट लिखे वो एक जगह और फिर से दिखा दें प्लीज। जी, अच्छा, आप ये जो सिंपल ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ पे, वी हैव रिटन C1ST here before the argument object, ठीक है। और अगर आप स्लाइड्स पे देखें तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आई कैन फॉर अ व्हाइल स्टॉप दिस एंड शेयर द स्लाइड्स, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। दिस इज़ हाउ this is actually done if you are doing it within the class, तो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है ये वाला टेस्ट लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्रॉब्ली इसको लिखने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द C1ST, द कांस्टेंट, द C1ST पार्ट विच आई एम रेफरिंग टू। ये क्यों यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, इसके आई लीव इट टू यू। इसके नीचे दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, बट नाउ आप इसको जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे आएगा और उसका थोड़ा सा जो है वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बट you can always declare and define it within the class block ताकि कुछ इसमें आसानी हो जाए। So this is the same program. I've gone through this program, so I'll not be going over it again. This pointer वाला है, I've also gone through that. अच्छा, so now so what I'll do is कि operator overloading के ऊपर I'll give you a worksheet as well. आप उसको उस worksheet को भी करें और कुछ I'll try to upload some more coding videos on that so that you can actually have some further understanding on that. ठीक है, and then we'll also have some practice in the lab also on this. So hopefully this shouldn't be a problem. So maybe कुछ और problems के लिए भी हम इसको करें, लेकिन उसके लिए I think you should refer to the coding videos that I'll be uploading, plus some worksheets जो कि मैं आपको दूंगा and try to follow that.
Okay ji, so now let's for a while जी जो we'll do that. Lab 4 का solution भी जो है ना we'll upload that. I've instructed the TAs to do that. वो किसी वक्त delay कर देते हैं लेकिन hopefully they'll, if they haven't uploaded it, they'll upload it soon. ठीक है जी. Okay. Right जी. So let's just move on to dynamic memory allocation part. As I told you earlier कि the operator overloading bit जो है we'll discuss that offline through worksheets and through the coding videos. और अगर उसमें कोई problem आती है तो you can always contact me through email and try to resolve any problem if there is any problem. ठीक है. It would be good कि अगर आप इसको समझें operator overloading को in the context of few examples. So what I'll be sharing with you are few examples and you'll try to solve those 2 examples. कुछ का solution मैं provide कर दूँ and then try to figure out कि ये काम कैसे होगा, and that would probably be the best way of learning it. क्योंकि आप जब तक practice नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. You'll have to practice that. You can also refer to the relevant sections of the textbook and try to solve and follow some of the examples that are given in the textbook as well. Acha, for now, for the remaining part of our class before the quiz actually starts at 3:30. I'll just be briefly giving you an overview of dynamic memory allocation part. अच्छा, so far जितनी भी declarations आपने की हैं, variable declarations आपने की हैं, उनकी definitions आपने लिखी हैं, you have assigned some values, वो सारी की सारी जो memory जो वो use कर रही हैं in order to store those things, that memory is primarily the memory that belongs to the stack. ठीक है, आपको CS100 से ये तो पता होगा कि stack memory जो है वो क्या होती है और किस तरह से वो यूज होती है. और I hope you know that, so I'll not be spending much time on that particular bit. लेकिन it is something, the memory that you assign in your program, and so far what we have been doing is that we have been assigning some variables before the execution of the program. So before the main program actually executes, हम memory allocate करते हैं, and then it remains fixed for the execution or during the execution of the program. ठीक है. Okay, so what if there is a dynamic requirement from the memory side? So while you are running the program, let's say कि हमने एक program लिखा जिसमें हम marks enter कर रहे हैं of students, and there are like 10 different subjects, and the enrollment in all these different subjects is different, right? So sometimes you will require, let's say, an array of size 10 for class 1, an array of size 20 for class 2, and so on and so forth. So dynamically आपकी जो allocations हैं memory की, वो dynamic allocations आपकी जो हैं वो आ रही हैं. Dynamic allocations would mean that you are allocating the memory while you are running the program. Okay, so pre-execution memory allocation नहीं हो रही यहाँ पे, during the execution runtime के ऊपर आप memory allocation कर रहे हैं, and that's why it's called dynamic memory allocation. अच्छा, dynamic memory allocation जो होती है वो stack के ऊपर allocation नहीं हो रही होती, बल्कि वो free memory के अंदर allocation हो रही होती है. And free memory in a computer
is what you call as heap. So heap is say memory allocation that is free. Okay? During the normal execution of the program, that memory is not utilized unless you instruct the system or your computing machine to allocate a memory, some memory on the heap or on the dynamic part or on the free memory portion of your computing machine. तो एक स्टैक है जिसके ऊपर आप लेट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या आपने इंट डिक्लेयर किया, फ्लोट डिक्लेयर किया, तो वैल्यू असाइन की, वो सारी की सारी एलोकेशंस ऑफ मेमोरी जो होती है वो स्टैक के ऊपर होती है। और अक्सर आपने ये सुना होगा जी स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ गया। स्टैक ओवरफ्लो का एरर मतलब क्या होता है, यानी स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या है? स्टैक ओवरफ्लो का मतलब ये है कि जो स्टैक के ऊपर मेमोरी एलोकेशन की हुई है, जो पहले से हुई है, दैट हैज बीन यूज्ड, ठीक है, दैट हैज बीन कंज्यूम्ड, और अब आपके पास कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं है, तो क्या आप काम करना छोड़ दें? द आंसर इज नो, you can't do that. So in that case, if you have if you anticipate कि जी अच्छा जिस तरह का प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ उसके अंदर स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है, तो in that case what you will do is कि you will not allocate memory on stack, but you will allocate memory on heap for your and heap is primarily let's say memory allocation area जिसमें फ्री मेमोरी पड़ी हुई है, दैट्स नॉट बीइंग यूज्ड व्हाइल द स्टैक ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो आप नॉर्मली उसमें डायरेक्ट एलोकेशन जो है विदाउट इंस्ट्रक्टिंग द सिस्टम नहीं कर सकते हैं। देयर इज अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी executed before some memory allocation on heap or on free space is actually done, ठीक है, and that is what is called memory dynamic memory allocation. So now this part of our discussion would focus on कि आपने heap के ऊपर या free area of your computer जहाँ पे memory allocated memory तो पड़ी हुई है लेकिन आप उसे use नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसे use कर पाएंगे for some more expensive problems that you want to solve, expensive in terms of memory utilization. So we'll discuss this with the help of simple examples, and then gradually we'll extend the level of difficulty. Okay, so in order to allocate the memory on heap or on in the free space, you have to use this keyword which is new. Okay, new is something which is relatively recent C++ के अंदर। अगर आप C यूज करें तो उसके अंदर मेमोरी हीप मेमोरी एलोकेशन के लिए आप यूज करते थे एनीवन नोज कि उसमें क्या यूज होता था? अब भी आप खैर यूज कर सकते हैं लेकिन न्यू हैज एक्चुअली रिप्लेस्ड इट। एनीवन नोज के C के अंदर आप मेमोरी एलोकेशन ऑन हीप malloc, एग्जैक्टली फाइन, सो malloc आप यूज करें, ठीक है। सो प्राइमरीली न्यू का कीवर्ड आप यूज करते हैं, और new ka keyword, what would this new keyword do? That would allocate some memory on heap, and this is how you can actually do this. The syntax of that is given here. You actually use this keyword new followed by the data type if it is only a variable, if it is an array तो उसके बाद आपको number of elements आपने बताने हैं within these brackets, and the keyword here is new, and this declaration bit actually goes to a pointer. So what is this actually doing? This is actually आपने let's say कि एक array की आप example लेते हैं, तो array में आपने एक array define की है of number of elements of that array that contains let's say 10 elements, ठीक है जी। So what will this pointer point to? Anyone? Sir, it points to the starting element of the array. Yes, it would point to the starting element of the array. Index 0 को वो point करेगा, ठीक है। और new का मतलब क्या है? The array has been declared और उसकी जो memory allocation आपने की है that is on heap. आपने free allocation free memory के अंदर आपने उसको किया है, stack के ऊपर आपने उसको जो है वो
मेमोरी एलोकेशन नहीं की, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट अबाउट दिस पॉइंटर? पॉइंटर आपने ऑब्वियसली एक पॉइंटर भी आपने डिक्लेयर किया, और पॉइंटर भी किसी ना किसी जगह पे कोई मेमोरी अपनी यूज कर रहा है, ये पॉइंटर किधर होगा? तो जो भी आपने डेटा टाइप आपने डिक्लेयर किया है आफ्टर न्यू, ये तो आ गया आपके पास हीप के ऊपर, ठीक है जी। और ये जो पॉइंटर आपने यहाँ पे किया है, ये किधर होगा? क्या ये भी हीप के ऊपर होगा? हाँ जी, तो पॉइंटर वुड बी ऑन द स्टैक, बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंटर दिस इसकी जो एलोकेशन होगी फॉर डिक्लेयरिंग दिस पॉइंटर, और जो भी इसकी डिक्लेरेशन होगी, दैट वुड बी ऑन द स्टैक। लेकिन डेटा टाइप जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसकी एलोकेशन आपकी बिकॉज ऑफ दिस न्यू कीवर्ड विल बी ऑन द हीप। ओके, so this is a standard way of like doing it. You can do it in both ways, जैसे भी आप करना चाहें। You define a pointer and then you are actually pointing it to an array of integers that contains 5 elements, and this has been stored on, or this has been allocated on heap. Or alternatively, you can have this representation. So this is a standard representation. The only thing that you need to add here is this new thing. ठीक है? Sir? Yes. सर वो एम्परसैंड का साइन नहीं लगेगा न्यू से पहले? नहीं, उसकी क्या जरूरत है? आप अरे कर रहे हैं ना? अच्छा, सही है। हाँ, आप अरे कर रहे हैं, तो इसलिए एम्परसेंड की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो probably pointer increment आपने कैसे करना है? if you want to browse the array, you already know कि अगर index 0 के ऊपर आपने एलिमेंट जो पड़े हुए हैं उनको उठाना है तो स्टैटिक पॉइंटर आएगा, और अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को उठाना है तो आप उसके इंडेक्स को 0 की जगह 1 कर दें, या आप पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दें foo plus 1 and then you have the ampersand sign, so it would automatically do the increment of that. Okay, so normal declaration versus dynamic declaration, we have already discussed this कि dynamic allocation जो होती है वो हमेशा आपके पास रन टाइम के ऊपर वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल साइज आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। एडवांटेज उसका ये है कि आपको अगर ये खतरा है कि स्टैक ओवरफ्लो होने का मामला है या कोई और मेमोरी यूज होने का मामला है, तो आप अपनी हीप की मेमोरी को यूज कर सकते हैं। अच्छा, नाउ बिफोर वी एक्चुअली गो एंड सी सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? लेट्स से कि आपने एलोकेशन हीप के ऊपर आपने की, तो इसमें भी तो प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ, सो व्हाट कुड बी द मेजर प्रॉब्लम दैट माइट कम अप? जी, एनीवन? जी, तो बिल्कुल ठीक है। रन आउट ऑफ मेमोरी, सो इफ यू रन आउट ऑफ मेमोरी देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स से कैसे पता चलेगा कि ये रन आउट ऑफ मेमोरी हो? आप अपना प्रोग्राम में क्लिक करें, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि ये रन आउट ऑफ मेमोरी है, या आपकी जो मेमोरी एलोकेशन थी वो ऐसी मेमोरी एलोकेशन है विच इज़ नॉट the right way of doing it, or you have actually exceeded that, and in that case आपके पास जो solution है वो ये है कि आप किसी तरह से exception handling करें। Exception handling what would exception handling mean? Exception handling would mean कि you will know कि this is because of overflow, ठीक है, this is because के आपके पास enough memory नहीं थी, जो आप allocate करना चाह रहे थे using new, वो आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो इस वजह से वो error आ रहा है। So what will happen if the system fails to allocate the memory? तो फिर क्या होगा? The program will terminate, I mean वो उससे ज़्यादा execute ही नहीं करेगा, वहाँ पे आके वो stop कर जाएगा, ठीक है। So there are like two ways of finding out कि ये कैसे होता है। One is through exception handling, and which is like bad allocations को आप identify कर सकते हैं, ठीक है। और उसका एक mechanism है, we'll study that mechanism towards the end, but today I'll just show you a piece of code that would help you
अंडरस्टैंड कि वो क्या होता है, उसकी डिटेल्स जो है ना वो हम बाद में उसको स्टडी करेंगे probably towards the end if we have time, because there are lots of different exceptions that can actually be introduced. And this is like a bad allocation piece of code जिसमें you can ensure कि अगर कोई bad allocation होती है तो वो आपको फौरी तौर पे पता चल जाए, ठीक है. The key thing here is, I mean, you need not to worry about the syntax. Syntax हम बाद में भी इसको देखेंगे. Just try to understand what's happening here. So whenever you are doing a memory allocation, you actually do it in a block, and this block is called the try catch block. The try catch block will do what? Try catch block, it's actually primarily a sort of a condition. What will it do? कि जब भी आपकी मेमोरी एलोकेशन जो है वो आउट ऑफ बाउंड होगी या ऐसी मेमोरी एलोकेशन आएगी जो कि आप नहीं कर सकेंगे, बैड एलोकेशन होगी, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन एंड इट विल टेल यू कि जी एलोकेशन फेलियर हुआ बिफोर इट एक्चुअली टर्मिनेट्स, ठीक है. तो यहाँ पे एक आपने न्यू कीवर्ड यूज किया, आपने एक अरे डिफाइन की, एंड यू विल सी दैट यू विल बी सक्सेसफुल. लेट्स से कि इनिशियली आप सक्सेसफुल हैं एलोकेट करने पे, but you have done it in a loop. That means कि आप बार बार इसको allocate कर रहे हैं, and the condition is true as long as the allocation is true. Allocation is possible. जैसे ही allocation possible नहीं होगी, it will actually catch this exception and throw it out and throw it on the system, and it would actually give you an allocation failure जब ये होगा. So this is within the catch block. So if some exception is cached, then this is the message that you will actually be getting. तो आपने जो भी allocation करनी है वो आप एक special block के अंदर करें, और that block is what you call as the try catch block. As I told you कि इसका syntax जो है, we'll discuss this later on, but the utility of this block is कि आप जो भी allocation कर रहे हैं वो आप इस block के अंदर allocation करें, and if you are successful, ठीक है, then in allocating, then the program will execute as it is. लेकिन अगर आपकी allocation ठीक नहीं आती तो उस केस के अंदर you will get an error and you will get a message saying कि जी आपने जो memory allocation की है वो दुरुस्त memory allocation नहीं है. So this is like one way of doing it. The other way of finding out doing that is through another approach which is called the no-throw approach. Acha, no-throw is also a keyword that is generally used here. So, or isme again, this is the pointer that you have defined. Allocation आपने new के साथ की, and then you are using a keyword which is no-throw, and then you are allocating the memory. इंटीजर इसमें 5 आपने एलोकेशन किया. अच्छा, समहाउ अगर ये एलोकेशन ना हो सके, फर्ज करें ये एलोकेशन नहीं हो सकती, आपके पास इतनी स्पेस नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये पॉइंटर जो है, दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू 0 मेमोरी लोकेशन, ठीक है. सो 0 को पॉइंट करेगा, एंड एनी पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू 0 इज व्हाट यू कॉल एज द नल पॉइंटर. तो एक नल पॉइंटर इस केस में जनरेट हो जाएगा नो थ्रो कीवर्ड की वजह से. व्हेनेवर देयर इज an exception that is taking place, or when there is no assignment possible of memory, if you are out of memory, ठीक है. तो उस केस के अंदर वो it would point, a null pointer would be generated. A null pointer means that it's actually pointing to nothing, by the way, ठीक है. So इस केस में null pointer आएगा, और आपने if you want to identify whether an allocation has been done successfully, क्योंकि if that points to the null pointer, then you should also know कि क्या वाकई ये ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है. तो उस केस के अंदर we'll see in a while, but null pointer is something that actually points to nothing. I mean, it's not pointing to any real sort of number. So a null pointer will be generated, and this is how you will actually do it. कैसे आपने इसको implement करना है no throw वाले केस के अंदर, you actually define type of pointer, और फिर आपने उसको initialize कर दिया using the keyword no throw, and now you are checking here कि अगर ये pointer जो है वो null pointer है, या p अगर p
आपने foo अगर किया and foo is the value there in foo is 0, either you can write it this way या आप ये कह सकते हैं foo assigns or gets a value of 0. If that's true, that means के the assignment of memory has not been done properly. ठीक है, so you write down a condition. And why do you write down a condition and write a statement here? So that if memory allocation is not done properly, so you get some sort of a message telling you कि जी अच्छा ये जो प्रोग्राम एग्जिट हुआ है या जो प्रोग्राम रुका है या जो आप रिजल्ट्स आपको प्रॉपर नहीं दे रहा, वो इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि आपकी मेमोरी एलोकेशन ठीक नहीं थी. ओके ओके, so that's it. इसमें this is how you can actually use this sample code here for no throw. इसमें you have to keep few things in mind, and one of the things is whenever you are using new, remember to include this in your program. ठीक है, include new in your program before you actually do that. और अगर आप using namespace, जी अब्दुल्ला खान, don't worry, मुझे पता 2 मिनट रह गए, so I'll just finish, don't worry about that. So just the last thing, तो अगर आप using namespace std use नहीं कर रहे here, तो then you already know कि आपको std scope resolution cout लिखना पड़ेगा, otherwise it will not be done. तो यहाँ पे what you are trying to do is कि you are trying to allocate this memory, ठीक है, और अगर p null pointer, ठीक है, तो then you will get an error saying कि the memory allocation has been failed. ठीक है, so I think I'll end it here so that you can ये डिलीट क्यों आपने यूज किया हुआ है जी? व्हाट इज ये डिलीट क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, अभी आज जो है वो हमने ये डिस्कस नहीं किया. बेसिकली डिलीट जो है वो गार्बेज को और डैंगलिंग पॉइंटर्स वगैरह को जो है वो रिमूव करता है. वील डिस्कस दिस लेटर ऑन. ठीक है, तो आप जब मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो मेमोरी ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होगी, यू विल हैव टू फ्री दैट मेमोरी, और उस मेमोरी को फ्री करने के लिए आप अपने डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं. वील डिस्कस दैट इन डिटेल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके जी तला, I'll discuss this next time inshallah, don't worry. Okay sir, okay, thank you. ठीक है जी, okay. So now I think you can prepare for your quiz to take place.